dahi or yogurt Hmm. uh, is not very good for your health and it should be consumed in minimum quantities. Correct. Contradictory to our belief that dahi or yogurt is a prebiotic or a Hmm. probiotic, Probiotic. which helps in digestion. Correct. Okay, and also dahi being something that goes and eases the digestion process Mhm. and should be highly consumed in summers Hmm. as compared to winters. Winters. But you are saying that dahi should be consumed in regions like Kashmir where it is Cold. perennially very cold. Yes. So what is this contradiction? Something that we really need an explanation on. Curd as such, it's cold on touch, but on digestion it's heaty in nature. Oh, okay. गर्म होती है, उसकी तहसीब जो रहती है वो गर्म होती है. Okay. So therefore, having it in areas like Bombay, or you can say anywhere in the southern part, it's not a feasible thing. Again, just leave apart certain areas like Kerala and Kerala majorly, where and Tamil Nadu, the coastal belt of Tamil Nadu, there you can have. Again, the geographical location matters a lot. So dahi का कैसे है? Dahi being very hot in nature on digestion will actually lead to acidity in a longer run, and that acidity would be like a molten lava kind of a thing. Choco lava cake देखा होगा. The moment you scoop, everything sticky and Comes runny out. comes out. Similarly, with curd, the acid that would form inside your body would be sticky and runny in nature, and therefore it has to be taken care that you don't have too much of curd overall. Again, कर्ड इज गुड इन विंटर्स एंड नॉट इन समर्स, क्योंकि गर्म होता है तो ठंडी में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. People who have too much of curd usually land up in either having nasal bleeding or anal bleeding and all those kind of problems, or even in women I have seen having metrorrhagia, or too much of heavy flow during the periods and all. You need to cut down on that curd. Now, coming to the probiotic, prebiotic part, it's a very interesting thing. Like, they have tried to classify it कि ये इसके लिए अच्छा हो, उसके लिए अच्छा. It's like asking the whole cricket team to play as an individual player. कि तुम यही करोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे. तुम्हारे पास बॉल आया तो ही तुम्हारा काम है, नहीं तो तुम काम के नहीं हो. ऐसा नहीं होता. When you play cricket, it's the team effort that goes Of into course. play. So similarly, prebiotics, if you see, today they say turmeric is there, ginger is there and all those things. हमारे जो खाने में इंडियन क्यूजीन के जो मसाले हैं, सुक्का मसाला हो या गरम मसाला हो, वो सब प्रीबायोटिक कैटेगरी में एक्चुअली आ जाता है. So prebiotic actually ensures that whatever you are going to eat is going to get digested properly. So उसको प्री तैयारी करके देना वो उसका काम है. बट एट द सेम टाइम प्रोबायोटिक्स जो रहते हैं वो रहते हैं कि कभी खाना खा के हो गया, उसको पचाना कैसे, उसका काम करना है. सो चीज़ कैसे है कि लोग बोलते हैं कि छाछ पी लो या फिर कर्ड खा लो तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का काम करेगा, बट नॉट नेसेसरीली. हर बार वो करे ही वैसा नहीं है, और हर एक को सूट हो अगेन वो नहीं है. सूट क्या होता है पता है? इंटरेस्टिंग है ये. पान. Oh, okay. जो हम वो मीठा पान खाते हैं ना, पर वैसे उसमें वो इतना क्या बोलते हैं, you don't have to put all those gulkand and all. If you go to a South Indian restaurant, Shetty Hotel in Mumbai, they give you something which has just coconut, little bit of katha, and थोड़ा बहुत वो sweet डालते हैं just for flavor. तो वो वाला जो पान होता है ना, that is good for you. Betel leaves, Betel basically. leaves. So at the end of the food, having betel leaf or chewing betel leaf with very little supari is necessary. That actually is a probiotic. क्योंकि Okay. जो भी कुछ खाया है अब उसका अच्छे से डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. वो इट शुड नॉट बी हैवी इन नेचर, ताकि जो खाना गया है उसको भी हैम्पर ना करे डाइजेशन में. एट द सेम टाइम इट शुड बी एनहांसिंग और कैटलाइज वर्क एज अ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव द डाइजेशन. सो इसके लिए वो पान बहुत बड़ा चीज़ है, और इसी के लिए लोग पहले पान खाते थे. Correct. ठीक Yeah, है, it was खाना a खाने part के of our पार्ट ऑफ अ culture. कल्चर, एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू बी आफ्टर योर मील्स. Correct, yes. आफ्टर यू हैव डन ईटिंग पान खाते थे. उसकी फिर वो क्या बोलते हैं, लोगों ने उसका मिस यूज करना और वो सब अलग हो गया. But Varieties actually बढ़ा दी. They बढ़ा started दी adding tobacco tobacco to and it. everything, because then you feel that cake and all those Right. kind of things. But otherwise the whole idea was very simple. It has to aid your digestion.
सो वो एड जो करना है वो पान करके देता है, राइट? सो आई ऑलवेज से हैव अ पान, अ सिंपल पान विद वेरी लिटिल दोस टूटी फ्रूटी एंड ऑल, और थोड़ा सा खोबरा, कत्था हल्का सा, और वो डाल के बस खा लो, और ऊपर लवंग लगा के या इलायची लवंग डाल के खा लो। दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। तो तुम्हारा ये जो प्रोबायोटिक और ये सब है वो कंसेप्ट उधर खत्म हो जाता है। So these fancy terms and the fancy products that we see in the market, हाँ, you know, like the probiotic drinks the and all, probiotic they're drinks not good. and They're not good. See, if you really have something big inside you, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, it's a temporary fixation. okay. It won't cure you forever. And secondly, uh, I would say 1 in 1,000 might be actually needing it. Rest 999 are not, are They don't totally, they require don't it. require it. It doesn't have to be a part of your daily diet. Not at all, not at all.